So hi everyone, this is Saniya Trehan, and my guest today is a super talented person. And if you've been somebody who's loved the Dream Girl franchises as much as I have, he's the man and brain behind the promotional campaigns. And Yes. he's also somebody who's a winner of the comedy reality show that was aired in Colors TV on in 2009. And as an actor, he's worked with Akshay Kumar in Boss, and alongside other TV shows like Ring Wrong Ring that aired on Sub TV. So hi Siddharth, I am really glad Hi, hi, that hi. we're doing this finally after Even so I am also many very years. glad. Yeah. So how's it going? Like, what's brewing these days? So now mostly I am not like very much into acting. Now like I'm most into writing and I'm like doing couple of projects. I recently did completed Dream Girl 2 Yeah, as a yeah, part of the promotional campaign. Like I did for the first part also and the second part also. right. So that's going on and multiple scripts I'm working on. Mm-hmm. Also, I started my own content house with a few very That's nice names. Yeah. So there are writers from Dream Girl also in that mm-hmm. who wrote the story and screenplay part. So it's a writers room. Basically, I have a group of 6 writers with me. So it's going well. We are doing a couple of projects. So like writing was always part of the plan, or did it just happen to you suddenly? No, it just happened because I was like main into acting and I used to write for myself. So people used to ask me, "Bhai, ye, who wrote it?" So I said that I wrote it for myself. So people were like, "आप इतना अच्छा लिखते हो तो अपने लिए लिखो ना." So first time Raj Shandelia he told me that Siddharth you write for me. Yeah. So I started writing for him. एक show आ रहा था Z5 का और अब आगे eventually didn't work out. So Hmm. I started writing from there from like 2018. Okay. Then I keep on like I stayed connected with Raj Shandelia also and then मैंने लॉकडाउन के बाद अपना खुद का भी स्टार्ट कर लिया था. So एक मेरी एक और फिल्म है विद उमेश शुक्ला जिन्होंने ओ माय गॉड प्रोड्यूस करी थी. Oh wow. So so वो मोस्टली शायद से दिसंबर में आ जाएगी. Okay. So वो शूट हो चुकी है यार. So yeah. So that's very exciting. But like, I remember you telling me that how you also went back home to study your chartered accountancy studies and Yes, yes, come back. yes. So what was that journey about? So I came here in 2009 Okay. and I won a show that you mentioned Chote Mia. So it Yeah. was a comedy reality show and like it was a very famous show Hmm. because एक उसके पहले उसका एक फर्स्ट पार्ट था which was hosted by कपिल शर्मा Right. and उसमें सलोनी डायने करके एक बच्ची आती थी गंगूबाई. She Oh won that yeah, show. yeah, yeah, yeah. I remember her. So Right, I was the right. winner of the Yeah. second part. I Okay. was the winner of the second part. Then I completed that show and I went back to my hometown. Then I again came back like after a year or so. And then मैंने बॉस फिल्म की थी अक्षय कुमार के साथ. Then I did रिंग रोंग रिंग एक सब टीवी पे शो आता था बहुत famous. So I did and it was like a bit of more struggling thing. That was a struggling phase because आपको as a actor ना बहुत काम नहीं मिलता है. उस एज में ना जब आप छोटे भी नहीं होते हो बड़े भी नहीं होते हो, so you're like Yeah. stuck somewhere. So Right. people used to talk to me like I called Sachin sir, Sachin Pilgaonkar. So I told him sir मैं मुंबई आ गया हूँ. So he said तू वापस चला जा. मैंने कहा क्यों? कहते नहीं बिकॉज इस एज में काम नहीं मिलता है बच्चों को. सो आई वाज सी उस वक्त इतना जुनून होता है ना कि लगता है कि सब बेकार बोल रहे हैं मुझे काम मिल जाएगा. मैं तो कर सो लूंगा. मैं कर लूंगा. सो आई वॉज वर्किंग नाइस बट उसमें उतना काम नहीं किया था मैंने बट इट वॉज डिसेंट. तो मुझे स्टडीज करनी थी बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली. सो आई वॉज वेरी कीन टू लाइक हैव नॉलेज ऑफ टैक्सेशन एंड एवरीथिंग. सो इट वॉज माई चॉइस टू गेट इन टू सी ए. सो माई फैमिली सपोर्टेड कि ठीक है अभी इसको सीए करने का मन है तो हम सीए करवाते हैं. एंड देन आई वेंट बैक. मैंने सब इंटर्नशिप करी एंड एवरीथिंग आई डिड एंड फिर वो कंप्लीट हुआ. 2018 में आई केम बैक. एक शो आता था कॉमेडी सर्कस इफ यू नो. Right, 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 right. Yes, I remember. इट वॉज Yeah. अ वेरी फेमस शो ऑन सोनी. सो Right. मैं उसमें एक्टिंग के लिए आया था. वो शो हुआ नहीं फॉर Mm-hmm. सम रीजंस. Mm-hmm. वो शो नहीं हुआ. देन आई स्टार्टेड राइटिंग विद राज शांडिल्य. फिर बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स किए. सो आई वॉज नॉट वेरी मच प्रिपेयर कि मैं राइटिंग में आऊंगा एक दिन मैं एक दिन राइटर बनूंगा. इवन जब मुझसे कोई बोलता था तो मैं चिढ़ जाता था. मैं एक्टर मुझे एक्टर की तरह देख. मुझे राइटर हो तो बोली हूँ. बट जब मैंने अच्छा लिखा एंड पीपल लाइक एंड मेरी लाइफ का जो फर्स्ट एक्टर नरेशन था वो बच्चन सर को था. Oh. तो आई वेंट टू हिज हाउस एंड मेरा लाइफ का जो फर्स्ट एक्टर को नरेशन था वो बच्चन सर को था. उसके बाद बहुत सारे हुए. उसके बाद राजकुमार राव को हुआ बहुत लोगों को हुआ. सुहेल खान को हुआ बहुत बहुत सारे लोगों को हुआ उसके बाद बट फर्स्ट बहुत बच्चन सर. That is amazing. That's new. या यस. So like what I'm reading is कि आपको ज्यादातर कॉमेडी जॉनर में like interest था या inclination था or have you tried your hand with other genres as well? दिस जो मैं उमेश सर के साथ कर रहा हूँ इट इज अ ड्रामा.
Okay. genre. So yes, so he was also trying on me, but he liked me. So director उसमें कोई और है, सीमा देसाई है. It is a like he is producing the film, Umesh Shukla. Okay. So they trusted on me and it's going well. So बहुत अच्छी film बनी है. But yeah, I prefer writing comedy because Okay. मुझे बहुत पसंद है वो. But in my writers room, I have writers जो सारे genres लिखते हैं. So there is nothing like अगर मेरे पास कोई भी प्रोडक्शन हाउस आता है तो हम ऐसा नहीं बोलते कि हम ये जॉनर लिखते हैं वो जॉनर, बिकॉज एज अ राइटर्स रूम मुझे सबको केटर करना है. Right. सो पर्सनली यस आई लव राइटिंग कॉमेडी एंड मेरा उसमें अपर हैंड है कहीं ना कहीं, बट बाकी जो स्पेसेस हैं वो मेरे राइटर्स ज़्यादा लिखते हैं जो मेरे साथ हैं. Hey, but I think even like being a little more versatile also with what you are opting is also like a nice, yeah, that's a nice way to, that's a nice, very nice approach that I have come across, right? So like, ऑल्सो ऑल्सो वंस मुझे ना किसी ने, मैं एक बहुत बड़े राइटर थे, एक शो आता था देख भाई देख. okay, तो बहुत पहले का शो था, बहुत हिट शो था देख भाई देख करके. सो मैं उन राइटर के घर गया हुआ था. सो मैंने कुछ सुनाया एज एन एक्टर, मैंने कुछ सुनाया था कि इनका शायद वापस शो आएगा, मुझे काम मिल जाएगा ये वो. सो ही टोल्ड ये लिखा किसने, तो मैंने कहा कि ये मैंने लिखा है सर. तो बोलते कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा लिखा है. तो उन्होंने अपना एक मुझे पेन दिया कि आप लिखा करो. मैंने पेन जाके कहीं डाल दिया घर में. मैंने कहा ये राइटिंग के लिए क्यों बता रहे हैं मेरे को तो एक्टिंग करनी है. hmm, सो आई वाज लाइक फ्रॉम दैट जोन टू मैं प्रॉपर राइटर, बट लाइक नाउ आई एम गोइंग टू प्रोड्यूस फिल्म्स आल्सो. that is तो amazing. So like, yeah. are you already working on some production like projects or is Yes, it still yes, in, yes, yes, okay, yes, yes. There is a production named LGM Locomotive Global Media जिनका अभी राणा नायडू आई थी. okay, सो right, वेब सीरीज या सो yeah, उनके साथ भी कुछ प्लान चल रहा है. देन इंदर सर के साथ कुछ चीजें प्लान चल रही हैं. सो आई एम लाइक इनटू गेटिंग इनटू को प्रोड्यूसिंग फिल्म्स, नॉट लाइन प्रोडक्शन बट या setting up projects and everything, getting actors directors on board and everything like that. yeah. So So like how has this like journey, in terms of success, how have you been defining your journey in terms of success, and what do you think like okay, one day and I say ki, okay, now I'm successful, this is the maximum I can do, like what will that scenario be like for you? कि ये जोन तो नहीं आता है कि दिस इज द मैक्सिमम आई कैन डू, बिकॉज ये तो नहीं होता है. बट हाँ आई थिंक ये जर्नी है. एंड मुझे लगता है अभी बहुत आगे जाना जाना है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ बहुत चीज़ें बाहर नहीं आई हैं. एंड Hmm. कोविड वॉज अ रियली टफ फेज, बिकॉज कोविड के पहले ना बहुत सारी चीज़ें थी जो चल रही थी. आई टोल्ड यू बच्चन सर का भी जो काम था मैं कर रहा था. देयर वर मेनी थिंग्स विच वर गोइंग ऑन, बट वो कोविड लगाना तो बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी. Hmm. सो वापस से ना कहीं एक स्क्रैच से स्टार्ट करें, बिकॉज आई स्टार्टेड माई करियर एट लाइक 2019 एज राइटर, और फिर वो कोविड लग गया. तो Hmm. वो चीज़ें चली रही थी एंड वो तो लाइक मटेरियलिस्टिकली कि मेरी कोई फिल्म्स बाहर आई या कुछ, वो अभी तक उतना ज़्यादा नहीं हुआ है. बट इट इज़ फाइन, लाइक इट इज़ गुड. लाइक मुझे ये है कि हम आगे बहुत अच्छा करने वाले हैं, बिकॉज आई हैव कपल ऑफ स्क्रिप्ट जो बहुत अच्छी हैं एंड वी आर ऑल्सो पिचिंग टू एक्टर्स एंड एवरीथिंग. सो लाइक फ्रॉम ईयर फ्रॉम नाउ मुझे लगता है बहुत अच्छा हो जाएगा. Okay, that is amazing. And since like I'm also talking about success, so it's very important ki so success is always related to a certain code of conduct or like values that we follow ki mujhe ye karna hai, but there is certain part of my Ethic. morality that I will not deviate from. So what have those values been like for you? What are those values for you? See, being a writer, I'll tell you, the most important thing is that I don't take credit of someone else's work. Okay. Like if even in the writer's room now, if there are three people sitting and they are giving inputs on a script, so you be honest with what inputs you are giving in the script. Yeah. This I believe. Like Yeah. sometimes what happens that you are having upper hand over the other writers, but sometimes there are ego clashes. अगर Mm-hmm. मैंने कोई एक ट्रैक डाला है, मुझे पता है किसी का ट्रैक ज्यादा अच्छा है. सो Right. इफ आई एम थिंकिंग लाइक अगर ये ट्रैक डाला तो उसका स्टेक ज्यादा हो जाएगा फिल्म में, आई कांट थिंक लाइक दैट. आई शुड बी ऑनेस्ट विथ माई प्रोजेक्ट. मुझे प्रोजेक्ट के लिए जो भी राइटर चाहिए होगा, जो भी ट्रैक यूज हो रहा होगा, इवन इफ माई स्टेक इन दैट इज 10%, मेरे इनपुट्स 10% ही रहते हैं क्रिएटिवली, बट आई शुड थिंक दैट व्हाट इज बेटर फॉर द प्रोजेक्ट. सो Right. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ईगो क्लैशेस में ना आई वर्क वेरी क्लोजली विद मेनी राइटर्स एंड व्हाट दे डू इज, अगर उनके ट्रैक्स नहीं आ रहे होते ना, वो दूसरे का ट्रैक हटा देते हैं जस्ट बिकॉज कि उनको दिखाना है कि मेरा स्क्रिप्ट में इतना स्टेक है, दिस इज माई स्क्रिप्ट. सो मैं उससे बहुत दूर रहता हूँ, बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो मुझे चीज़ हिट चाहिए. आई Right. वॉन्ट कंटेंट जो है ना वो बहुत अच्छा बने. सो दिस थिंग आई थिंक दिस लाइक आई बिलीव इन दिस थिंग, और ये मैं बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ. एंड सेकेंड थिंग इज, एनी राइटर अगर वो अपने आप से पूछता है ना, सो ही नोज दैट उसने कितना काम किया है स्क्रिप्ट पे. सो ही शुड बी ऑनेस्ट विथ हिमसेल्फ ऑल्सो एंड अदर्स ऑल्सो. लाइक Right. आप किसी का क्रेडिट मत मारो, बिकॉज लोग बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचते हैं एंड यू नेवर नो कि किसकी जर्नी कहाँ से आ रही है, क्या स्ट्रगल्स कर रहा है कोई.
So if there is like if you can do something for any writer, so आप उसके credits मत मारो, you pay him well, like both the credits, So पैसे भी और नाम honesty भी. and respect is your major ethic that you're, Respect. yeah, So like two things, एक तो उनके credits मत मारो, और दूसरा if there's something which you can do better for the film, so आप right, उस पर focus करो instead of getting into the ego clashes thing. right, So right. that So doesn't work in whatever long is term. working at a better scenario and rather than putting what you think is first. So that is a very Yes, yes. nice approach. I think everybody should You learn should that together. in Yeah. industry settings. I think that is something that everybody should, try and imbibe. So that is Yeah. sure. Definitely you should. Yeah. Okay, so we are taught a PRISM philosophy that basically talks about, like, the 5 aspects of ethics, that is prepare, respect, implement, share, and maintain. So Okay. prepare for, say, like, okay, so in industry setting where I'm saying that I'm preparing for a certain, say a presentation, then Mm. respect where I'm giving equal amount of respect to all my fellow teammates. Mm. Implementation is the decision-making power. Then Yeah. sharing is giving, like, having a transparency between two people about what your thoughts are and what their thoughts are. And maintaining is maintaining a positive, healthy relationship in a workplace. So out of Yes. these 5, what do you think is the very, the most impactful or the most prominent, important aspect for you in the industry? I think इसमें से कोई भी लैक करता है ना, Hmm. तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा. सो Right. वी कांट ओवरलुक एनीथिंग आउट ऑफ दीज, बिकॉज ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बहुत important है. हैं. Yeah, so one thing I prefer that sharing is very important, because there should be transparency in things. There shouldn't be any ego clashes in things. So that is very important aspect. But I think इसमें से कोई भी ऊपर नीचे है नहीं, because आप एक भी मिस करके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. Mm-hmm. So all of these things matter a lot. That is a That very I nice think. point of view. Y- And Yeah. so I myself have been, so I'm studying product design at the moment, but I have, tried my hand in little bit of writing and poetry and everything simultaneously. So like Competitive. that just came along, so when I was growing up and that. What do you have like certain tips that you can give to like very young writers like myself? Yes. I'll tell that you should watch a lot of films, Oh, because yeah, that is because a I very am, yes, this is the homework, you know. So when I started, I was like very blank at films, because मैंने films देखी नहीं थी, and I was like, I love to read. मैं अभी भी मुझे time मिलता है ना, if I want to get fresh, I just start reading books. Oh, wow. So I am more of a reader than watching things. So people told me that you should keep watching films. So मैं बहुत कम film देखी थी, मैं list बनाई कि मैंने अब 200 film देख ली हैं. So you should watch cinema. That is very important thing, because like आप वहां से लेते हो ना, then वो आपके आउटपुट में आता है. Right. So that is very important. So you should watch like whatever cinema you can watch. And उसमें भी ये नहीं देखना चाहिए that कि क्या चीजें हिट हैं, Mm-hmm. because बहुत सारी बाहर की फिल्म्स हैं जो सिर्फ हिट हैं, जिन्होंने पैसा कमाया, बट दे आर नॉट दैट गुड, Yeah, जो right. यहाँ पे भी होती है, जो इंडिया में भी होती है. तो यू शुड लर्न दैट व्हाट स्पेस यू वांट टू ग्रो इन, व्हाट जॉनर यू वांट टू ग्रो इन, एंड आप उसकी फिल्म्स देखो जो भी अच्छी हैं, जिनको अवार्ड्स मिले हैं. एंड सो दैट इज द बेस्ट वे टू ग्रो, आई थिंक, टू वॉच फिल्म्स. दैट इज द बेस्ट पार्ट. Amazing. I think I've had a fun time here doing this. Me too. So I think I mean I'll hopefully like probably reconnect with you sometime soon. And maybe we can do this again. This is amazing. Yeah. Yeah, I love to do it. Okay. Thank you so Okay. much. Thank you for joining me. Okay. Okay, Sanya. Bye. Bye. Bye.